Hello and welcome to this podcast. And today I was thinking I should start with a question that even I am surprised by. So before I ask you that question, can you just give me your introduction in 3 words? That is the trick question. Synonymous to environment conservation. Oh, lovely. So I want to congratulate that you managed to do it so fast, because most people struggle with this. This kind of description is hard to come by, but people who live with their hearts, I think, get to it very fast. So when you talk about environment, I want to bring up the subject of inner environment, because as a writer, even yesterday I was talking to my daughter and I was trying to tell her how we think and what happens before we write. So then I had to give her the many junctions one crosses before one communicates. So there is expression. What everybody sees is the expression, or sometimes the depth of the words, or even cleverness of how we communicate, or emotion that we tap. But I told her that all of these are still manifestations. When we start thinking, there is just this one germ of a thought about anything, and which is very nascent. You also have to be very quiet to catch it. And when I'm losing your audio, I think. No, I can hear you. Now this is working. So when we are talking about environment, one of the things that I have been feeling very strongly about myself as well, very often. One feels a lot sometimes in the rush of this concrete jungle and trying to make a living, because no matter what we say, all of us are middle class in a huge bracket. Irrespective of, if you have a car, then you have to take care of that car. If you don't have a car, then you want a car. And if you have a bike, and so on and so forth. All of those things are necessities sometimes in terms of traveling or lifestyle or whatever it is. But a lot of time goes in. But if one were to go inner, in the inner life, the environment of late in the last 1 year, I think, after kind of COVID has eased in the last 6-8 months, I've been thinking creating the ambience is a very important aspect of flowering. Whatever is flowering, good or bad, doesn't matter. But that ambience, that environment is important. So as a person, when you describe yourself as somebody who cares for the environment, how do you view the inner environment? What is it that makes you, what makes Srilata Srilata? Just before today's session, I mean, I was being busy from morning. Actually, we have a e-waste drive happening. And my ma'am, she's left for Bangalore, so I had to go all the way to Garden Estate to pick up her e-waste and all. But I always normally try to start my day with my little meditation, yoga and meditation. So I was very late and I wanted to be on time here also. So I did my shortcut meditation. I have a shortcut. Like everything is instant. No? So, but wo karna hai. Definitely karna hai. I try my level best to. That's the time when I'm with myself, definitely. And I really, initially when I learned this little thing from a very nice institute in Thane only, and they used to keep saying, na, apne saath raho, apne andar jao. And so मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या अंदर जाना है, क्या देखना है. I'm a very transparent person. You can see me in and out. So, and I believe I live the day by the day. I really don't go into too many deep things. I don't interpret very deeply. I look at it at the surface thing. तो मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या है ये अंदर जाना. ये तो मुझे बाहर का बहुत आवाज सुनाई देता था and all that stuff. And she used to keep saying that it is not a one-time thing. You can't do it in one day and practice it. You have to do it regularly. And unfortunately या fortunately मुझे भी COVID हुआ. तो last second wave के starting में जब हुआ था and all, that time I decided कि नहीं, I have to really seriously give my body some time. It has to happen, definitely.
And from that time, from the time I recovered, now I'm regular with my meditation. And abhi, I will say a nutshell, not even a nutshell ka wo upar ka jo danda rahega, I can probably understand ki kya hota hai andar jana. And it's a beautiful feeling. I mean, I don't think it can be expressed, definitely. And I am trying to do that with my children. Ki, try to inculcate, yeah, aisa nahi hai, don't get into this thing that it is something old-fashioned, or the youth should not be doing it, or jab retire honge tab karenge. Aisa kuch bhi nahi hai. Try to have it as a practice. It's an amazing feeling, and it recharges you through the day. Like jaise apna mobile recharge hai, so if I am on my toes till 12 in the night, I attribute a lot of it to my inner environment. And एक thing बहुत clear है उसमें कि I don't know if I'm boastful here or whatever, कि I am on the right track. Probably I'm reiterating to myself, या कुछ तो है जो बोलता है कि ठीक है, what you are doing. So that inner conscience जो बोलते हैं ना कि we should always be in conscience this with our inner self, our inner conscience. वो हो रहा है मेरे साथ पक्का ही. And वो बहुत साफ है, बहुत clearly. Probably that is why I could immediately say what my objective in life is today. And I have not come to this objective in life in like 21 years or something. It has probably taken me 45 years to come to this point today. But now I'm very clear. Now I'm very clear that yes, family, friends, relatives, children, husband, mother, father, सब है. But एक larger चीज को probably भगवान ने मुझे रखा है. Like I was listening to Ali yesterday, and when he was talking about his family and things, so I was just taken back when I was 1.5 years old. I had a serious bout of convulsion, where probably doctor had said कि इसको graveyard लेके जाओ, कुछ नहीं होगा इसका. And my parents did not give up. They ran with me. I'm talking about 1973. They ran with me to the Sion Hospital. That time there were no taxis, no cabs. Luckily, our only person in the whole colony who had a car was standing out of the dispensary, and we could reach Sion Hospital within 20 minutes. And the doctor was not available. A student who was studying MBBS just took me and rushed me, and the machine wasn't working. So there was a lot of saliva which had apparently got choked, and because of which I was not breathing. And just with a normal pipe, he just removed that whole thing, and I came into conscience. So then when he was talking about, कि ये क्या है, so somewhere even I felt कि probably अगर वो time पे मुझे जान दिया था, तो कुछ तो मेरे लिए store में था. Something was kept in me for store, and that's why today I'm alive and ticking. And there has been no looking back. Like that doctor there, the compounder actually, not even the doctor. He always, whenever he used to meet mom, he used to say कि आपने बहुत पुण्य किया है कि आपको आपकी बेटी वापस मिल गई. So it was a complete gone case. And parents now sometimes really, and I am definitely, of course, thankful to my parents for everything that they've done, but giving me life again, not giving up at that point. When the doctor tells you कि इसको graveyard लेके जाओ, what does a parent do? But the parent did not listen to the doctor and rushed me. Probably वो time पे किसी ने उनको भी कहा, किसी ने सबको कहा, और वो एक clarity आया. तो I feel कि वो एक मकसद तब लिखा गया था, और वो मकसद probably 40, I would say 40, when both my children, my son became 10 years and my daughter was 5. That time I started reworking in that literal sense. But till that time I gave them their childhood. I was more at home for them. So tab 2009, 2 decades हो गया almost अभी. वो time से again I realized my मकसद, and धीरे वो धुल्ला हुआ मकसद clear होते गया. I will not say I'm clear today. I go and do everything under the sun many times, and my children shouted me for that. But धीरे definitely ज़्यादा clear होते जा रहा है. And
मेरे वो एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में यहाँ, बहुत इंटरेस्टिंग वंडरफुल स्टोरी यू हैव. I seem to hear such stories from almost all the people who are leading good lives. So it is not by chance. Following my particular path of meditation, I particularly see the Buddha as defining dukkha as a very important factor. I see that link almost everywhere, and but not everyone who has suffering has wisdom. But almost everyone who has wisdom has seen suffering in some manner. Is my understanding so far. So my question to you, you said कि मैं तो बहुत superficially चीजों को ले लेती हूँ और बहुत ज्यादा deep नहीं सोचती हूँ. But आपने एक और चीज बोली, transparency, that I am what I am and whatever inside out. Now, with however clear you are in the way you spoken in this one answer, you're not dumb, that is for sure. और अपना नुकसान करते जाओगे मार्केट में, ऐसा भी नहीं लगता है कि आप जाओगे और कुछ ऐसी चीज बोलोगे जो what will work against you. Now within this space, what gives you the strength to be transparent? Inside you, एक तो मेडिटेशन है, जो वो स्पेस है जहाँ पे आप रोज अपने आप से मिलते हो, जो भी करते होंगे, बट अपने आप से मिलते हो और जानते हो कि what is it, whatever that you are doing, but वो स्पेस आपको आपके साथ परिचित करता है रोज थोड़ा थोड़ा. But where do you get this strength? Because being transparent means losing out on something or the other in today's world where everybody has an agenda, almost. A lot of people have. Let's not say everybody because it is wrong. There are a lot of good people in this world who do selfless things. So where do you get the strength from? Two people. When I say people, there are two communities completely by themselves. One are my beneficiaries for who I am working. So all those NGOs that I'm connected with, all the hard work I am now, especially again, I always say like the LLP that I started, बहुत लोगों के businesses, बहुत लोगों का काम कोविड में गया. मेरा तो मी का जन्म हुआ कोविड में. So my me was born in COVID. So I considered that challenge as an opportunity. As you said, yes, I'm in the market to definitely to continue, but not to continue only for my gains, to continue for my gains so that I can continue. I don't know if I'm making sense of what I'm saying. You are. But yeah, but the beneficiaries, the way they have, I don't like to use the word struggled here, but the way they have floated in COVID. So I am probably a representative of all those beneficiaries to the larger audiences. So वो तो एक कायम source of inspiration. कायम. Whenever I'm low, I just call one of my NGOs and ask them for something, and they will immediately say, "Apan he karu, te karu, apan I'll send it to you, and don't worry, we will get it." I can give you any number of stories for that. The second community of people are my customers. I hate to call them customers. They are my well-wishers. They are so rooted, with me. It's amazing. I'll give you a small example for this. There's one NGO that I'm associated with. It's called Seva Charitable Trust. Seva Charitable Trust works in the National Park, Borivali National Park, Sanjay Gandhi National Park. And जब वो बीच में एक साइक्लोन टाइप आया था अपने मुंबई में, तो वो टाइम पे इनको अंदर ऑब्वियसली पक्के घर अलाउड नहीं है, तो जो रहते हैं अंदर आदिवासी, नॉन आदिवासी, व्हाटएवर, एंड इनके वो टारपोलिन के शीट्स होते हैं, तो वो सारे ही उड़ गए एंड दे वर लाइक लिटरली बेघर ही हो गए थे बिकॉज एंड देन देयर वाज हेवी रेन्स एंड थिंग्स लाइक. So I have been promoting and selling products made by Seva Charitable Trust. So my audiences are accustomed or are introduced to Seva Charitable Trust through the products. So again, I don't call them products, I call them communication tools. These are tools which introduce you to Kaun hai backstage. So I just made a collage of all these products that are made by Seva Charitable Trust, and I send it to the people who have bought the products of Seva Charitable Trust.
एंड आई सेड कि आज तक आपने प्रोडक्ट्स यूज किया, आपको बहुत अच्छे लगे, आपको आपने आपने देखे भी है, आपने इनके पीछे के लेडीज को, लोगों को नहीं देखा। आज टाइम है इनका, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अगर बना रहे थे तो उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठ के बना रहे थे, आज वो टूटी फूटी झोपड़ी भी नहीं रहे, तो वो कैसे बना? आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू टू सिंपथाइज, बट अगर आपको ये और प्रोडक्ट्स चाहिए तो उनकी टूटी फूटी झोपड़ी को तो हमको संवारना है। एंड आई नीड टारपोलिन शीट्स, 1 टारपोलिन शीट कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज, ऐसे हमको 80 चाहिए, तो आप देख लो। I put this post at 9 p.m. in the night. At 9 a.m. in my GPay, I had 35,000 in my GPay. They didn't even ask me Seva Charitable Trust के account details or anything. तो ये जो फोर्स है ना, ये मेरे क्लाइंट्स के, I can give you so many stories. Tata Digital, Harshad Pai, who worked 10 years back with Axis Bank, calls me after 10 years. Now I'm with a new company, मेरे को exhibit. I said मेरे पास तो आपका नंबर भी सेव नहीं है, आपने मेरा नंबर सेव करके रखा है. That's why I said synonymous to environment conservation. Whenever anyone thinks about environment, any social this, they think about me. यही मेरे लिए रिवॉर्ड, कि वो उनके मन में, उनके जहन में श्रीलता मेनन कहीं तो नाम आ जाता है. तो आई सेड इससे ऊपर और क्या चाहिए? तो ये जो टू फोर्सेस है ना, they don't allow me to stop. They don't allow. कितना भी हेल्थ रिलेटेड, आई कैन गेन अ लॉट ऑफ सिंपैथी फ्रॉम एवरीबॉडी. हाथ पैर गया हुआ है, बैक गया हुआ है. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई कुड नॉट वॉक फॉर 5 मिनट्स, वॉकिंग स्टिक के सिवा नहीं चल पाती थी. 3 डॉक्टर्स ने इमीडिएट नी रिप्लेसमेंट बोला था, इमीडिएट, चलो ऑपरेशन थिएटर. एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करना. एंड माय हस्बैंड वाज प्रेशराइजिंग मी, वाज लाइक यू नो मोर देन द डॉक्टर. क्या the doctor knows, na, right? Kind of. That and I can assure you, everyone knows more than the doctor. These are very nice people, very nice doctor. And finally, I got the doctor who told me नहीं कर रहा है operation. तो वो भी तो किसी ने दिया ना मुझे, because I was not able to reason with my husband, and he was forcing me, and I was groaning in pain because every night was becoming difficult. So there was this tussle amongst myself कि भाई, अरे आपने ही बोला कि ये मकसद है आपका, और आप ही आज मुझे ये अगर करा रहे हो तो क्यों करा रहे हो, मुझे उत्तर दो. और वो उत्तर भी मुझे साफ मिला. तो everything that happens for the good is some mantra that I go by. जो भी हो, and that helps me to be transparent. Because only if you are transparent, then जो होगा वो good होगा. I am coming to that. That is my question. I want you to speak a little more on this part, where, you know, when I have a lot of friends who are believers in God. I have a lot of friends who are not believers in God. बहुत सारे ऐसे टाइप हैं आजकल, जिनसे भी बात करो हर एक का अपना अपना एक वर्जन है, और मुझे कोई सही और गलत नहीं लगता. What works for you? Correct. But only sticking to the believers for a little moment, where they have a certain set of belief system. They think कि वो जो भी करें चल जाएगा, बट भगवान सब ठीक कर लेगा. वो सुबह जाएंगे, वो मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, जहाँ भी जाते हैं, या वो एक प्रेयर रात में कर देते हैं, या वो थोड़े पैसे चढ़ा देते हैं, या थोड़ा दान पुण्य कर लेते हैं. they find out कि ये पार्ट मेरा अच्छा है तो वो पार्ट में कुछ भी करूं. Like I was talking to somebody and I said, you know, a lot of people are believers, but when they sit on their, वो गले पे बैठते हैं ना दुकान के, तो दैट टाइम फिर वो ग्राहक के साथ कैसे भी चले वो जस्टिफाई कर लेते हैं खुद को. So this is one very unusual aspect, I would say, where we are blinded by the fact that belief is in itself is enough. I want to ask you, because you are a believer, you named at least 2 stories which are life-saving stories. मतलब छोटा मोटा भी नहीं कि ऐसा पैसा गया था और मिल गया, आपका जान जाने वाला था, आप बच गए, और अभी भी आपको बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम आया and it got resolved. And you seem to say कि okay, God or your the direction that He gave you has saved you or whatever. But I want to ask, what attracts this power? सब तो मांगते हैं, सबको क्यों नहीं मिलता? So I want, what is your thought about this? That God is yourself. वो God आप खुद हो. God helps only those who help themselves. And वो तब तक नहीं जब आता है तब तक आप उसके लिए उतना तरसो, वो ऐसे भी नहीं आता. It doesn't come. And
one thing I do is I whatever you say power, I don't keep calling it in and out. वो क्या ना रोज बैठ के ज्योतिष देखना कि हमें मेरा जिंदगी में क्या होगा, अरे आप बोल दो. I don't believe in that kind of I believe in living in the present, but there are some moments when you are completely at loss, and वो भी परखता है कितना कहाँ तक ये करना है. तो वो ऐसा नहीं होता है कि एवरीडे मॉर्निंग मेरा प्रेयर होता है which is mainly to thank. अगर उसने मेरे पैर को तोड़ा भी और जोड़ा भी, so there is some reason where he was trying to warn me of certain things. I had a wonderful the NGO that I was working with only in Thane, only Paryavan Dakshina. Hajanni sir was the president of that NGO, and he's a normal physician, doctor. So when I used to do as I told you, I'm a very hard copy person. I had a lot of programs. I used to do a lot of sessions, 3 घंटे, 4 घंटे minimum खड़ा रहना तो जायज होता ही था. You know, it was there. And I have had an operation when I was in school, actually 8th standard में. मेरे knees के बीच में जो cartilage होता है, मज्जा जिसको बोलते हैं cartilage, that had overgrown or something. And वो time पे ऐसे technology नहीं था, तो वो था कि वो पूरा ही cartilage निकालना, ना बजेगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी. That had overgrown और वो टूट रहा था, and it was causing a lot of discomfort for me to walk. I'm talking about when I was in 8th. So then doctor said कि नहीं, इसको अब तेको निकालना ही पड़ेगा, and she'll be fine, but after 60 she will have some problems because वो रब होगी. I started problems at the age of 40 itself, and the first doctor that I went was to my own president, and he told me, Srilata, if you have had an operation in 8th standard, you have been taking your life very, very, very easily. हमको तो पता भी नहीं था कि as a doctor I never even knew that you had some problem. You've had a physically, you don't have a cartilage, and the cartilage can't grow on its own. There is no way that the cartilage can grow, but you have been totally abusing your body. This is the words he used, and that is the point I put a comma to myself कि ये तो गलत है यार. I can't keep telling myself कि चलो go do it. अरे finally it's a machine. उसको कहीं तो ओवरऑलिंग करने की जरूरत है, कहीं तो आपको रुकने की जरूरत है. आप जस्ट करते जाओ. और वो उसने फुल स्टॉप इतना जोर से लगा दिया कि एवरी टाइम आई ट्राई टू गेट बैक टू इट, ही केप्ट ड्रॉपिंग मी. आई फेल फ्रॉम द बाइक, आई फेल एट होम. कुछ ना कुछ होते रहा, बिकॉज ही वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल मी कि यू आर नॉट येट रेडी. यू स्टिल 40 years, 8th standard I was what, 13 or so, till 40. तो 1 साल तो बनता ही है ना. 1 year तो थोड़ा कॉमा डालना ही है आपको. अगर आप नहीं डालोगे और थोड़ा ये करके अगेन यू गेट, देन अगेन यू आर अब्यूजिंग. तो वो जो चीज है, आई थिंक वो, इसलिए मैं वही बोलती हूँ कि भगवान को नहीं, आप बुलाओ जरूर बुलाओ रोज, बट क्यों बुलाओ? तो थैंक करने को बुलाओ. Call him to thank him. He's given, and today there is so much that he has done for me. So much. If I'm alive, it is because of him. If I have a wonderful family, I can do so much social work, is because I don't have any financial problems in my house. My husband is taking care of everything. आजकल का घर का जमाना. I've got 2 wonderful children who are on their own. खुद मेरा भी देखभाल करते हैं. I've got great parents who have already supported me. I've got a wonderful brother who बोलते ही वो ये कर देगा मुझे. जो wonderful friends, wonderful neighbors, wonderful. I always say this. I live in a very wonderful world. I don't know कि greedy लोग क्या होते हैं, या inherently मुझे तो लगता है कि सारे humans अच्छे ही हैं. कोई गंदा नहीं होता है, कोई वो circumstances कभी ऐसा हो जाता है. तो बट मुझे सिर्फ अच्छे लोग मिलते मेरे जर्नी में, सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग. तो वो है वो स्ट्रेंथ, वो है वो मेरा पावर, और वो है मैंने बहुत लाइक व्हेन अगेन वन इंस्टेंस वेयर आई विल से, व्हेन मम्मी गॉट कोविड, पहले मेरे मम्मी को जब कोविड हुआ तो वो आइसोलेशन करना था, एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरे पापा को नहीं हुआ कोविड. तो इट केम टू अ पॉइंट कि माय मॉम विल हैव टू स्टे अलोन, and my mom has a vision problem. She's not able, and she was obviously too worried, too tensed. उस रात मैंने भगवान को बुलाया.
because my husband, there was no way my husband was going to allow me to stay with him because तो अभी तक हमारा रिपोर्ट्स नहीं आए. तो लिटरली मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मुझे पॉजिटिव कर. ये एक ही तरीका है, नहीं तो हाउ विल आई बी विथ माय मॉम. और उसने मुझे पॉजिटिव कर दिया. और बॉर्डर लाइन केस तो मेरे कारण किसी को होगा भी नहीं. एंड आई एम चंगा भला, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं. आई कुड टेक केयर ऑफ माय मॉम एंड आई कुड बी विथ हर बिकॉज आई वाज पॉजिटिव. इससे ज्यादा क्या आपको ये चाहिए कि भगवान है? आई डोंट थिंक इससे ज्यादा आपको कोई प्रूफ की जरूरत ही है. उसके बाद 8 दिन के बाद माय मॉम स्टार्टेड बिकमिंग सीरियस. उनका लंग इन्फेक्शन शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया. नो हॉस्पिटल्स वर रेडी टू एडमिट मी विथ हर बिकॉज आई वाज नॉट सीरियस ऑब्वियसली एंड आई डिडंट वांट हर टू गो अलोन. मेरा ये कंडीशन था कि वो जिस रूम में रहेगी वही रूम में मैं भी रहूं. एंड मेरा दिमाग फंक्शन नहीं कर रहा था. पीछे मेरा पूजा घर ही था. मैंने टर्न करके हाथ जोड़ लिए, भाई मेरे को कल एडमिट कर दो मम्मी के साथ. तो ये जब डेस्परेट ये होता है तो वहां तक आप अपना कर रहे हो कोशिश, तो फिर एक अलग चीज होता है. उसको एनी काइंड ऑफ है. आई फील यू शुड नॉट इमीडिएटली जंप कि भाई आप कर दो, ये मुझसे नहीं और आप करो, ये आप करते हो तो ये आप, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो वो हेल्प नहीं आए. कोई भी आप करो, स्ट्रगल करो, उसको करने की कोशिश करो, वही ट्रांसपेरेंसी है. तो वो आदमी जब देखता है ना कि इसका तलमल कितना है इसमें, तो वो जरूर आपके लिए आए. वो कोई भी हो, इंसान हो, इवन माई एनिमल्स ऑल्सो रियलाइज, माई प्लांट्स रियलाइज, माई ट्रीज रियलाइज. हमारे ऑर्चर्ड के रोड पे 432 ट्रीज काट दिए. 400. मेरे घर के सामने का जो कदम का झाड़ में जो 13 साल से देख रही, आई वॉज अ हेल्पलेस म्यूट स्पेक्टेटर. रोज मैं उनको एनर्जी दे रही हूँ अभी जब मेडिटेट कि भाई आप ना, आपको ट्रांसप्लांट, मैं थोड़ा कंपोज दूंगी, ये दूंगी, वो दूंगी, पर आपको आना है, उगना है वापस से. तो आप देखो, मैं जो भी सपोर्ट करने की कोशिश करूंगी, पर आपको उगना है. और वो उग रहा है, वो उग रहा है. तो ये जो चीज है ना, वो लोग देखते तो व्हाई ह्यूमंस विल नॉट सी. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन है. वो ही है आपको कैसे मालूम? शी भी तो हो सकते हैं. कौन? भगवान. हाँ, that's why I said no, Surendraji, I don't get into the depth of it. I don't get into he है, she है, it है, you है, we है, नहीं. I don't get. I am an environmentalist, but I'm not a fanatic. I don't get into veganism. The reason why I'm asking you exactly this point, because most fights in the world are about inconsequential. Correct, absolutely. मतलब यहाँ तो आप मतलब forget oneness between human beings. You are talking about oneness with animals, oneness with plants, oneness with God, oneness with people who don't believe in God. It doesn't matter. मतलब as long as you are not fighting and you are a decent human being, you are not being a burden on the society. You are trying to do your best. I think it's more than enough. One doesn't need to believe what the other person is believing. It's okay. मतलब आपका अपना life experiences है. Absolutely. So, there's one little question I have here. People like you and me are seen as a little mad, if you know what I mean. Yeah. Yeah. How do your loved ones and friends and your colleagues take this bullheadedness? क्योंकि ना इसमें जो अभी आपने बताया, जैसे ये पागलपन है कि मैं मम्मी के साथ ही एडमिट होंगी, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी, ये तो लकीली यू प्रेड फॉर द राइट थिंग और वही हुआ. बट जब तक मेरी समझ है, आपको जो आंसर सुने, आई डोंट थिंक एनीथिंग वुड हैव मेड अ डिफरेंस. आप तो करते तो वही थे, बिकॉज यू वर क्लियर कि अभी चारा नहीं है, जो करना है. मतलब दैट इज वन थिंग इवन आई रियलाइज इन माय लाइफ. देयर आर थिंग्स यू मे लाइक और डिसलाइक, बट उसके बीच में देयर इज वन थिंग यू हैव टू डू इट. उसका चॉइस कुछ नहीं है. उसके बारे में यू लाइक डिसलाइक वो सब साइड में हो जाता है. Correct. So how do your people around you see this श्रीलता, जो सुनती नहीं है यार, वो एकदम पागलपन पे उतर जाती है, वो कैसे देखते हैं और आप वो कैसे हैंडल करते हो? आप ये my husband is standing right behind me. They've all given up on me. They've all given up on me. I mean,
संडे जहाँ सब लोग रिलैक्स करने रहते हैं तो मैं 48 आवर्स काम करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा घर का कोई ड्यूटी नहीं है उस दिन, तो आप लोग मैनेज कर लो। अभी देखो हस्बैंड ब्रेकफास्ट अभी खा रहे हैं, तो वो भी बेटी बना के दे रही है, बिकॉज दे नो कि वो तो जाएगी, वो तो जाएगी तो जाएगी, तो वो तो सुनने वाली नहीं। दे ऑल ओके टिल द टाइम आई डोंट फॉल इल। द मिनट आई फॉल इल, फिर उनका बहुत उपदेश चलता है, फिर बहुत ये चलता है, बस इट इज आउट ऑफ लव, इट इज आउट ऑफ लव, out of care, it is out of sincere like my son, yeah, recently we had a very stiff argument on the same thing ki aap har because I can see that because he's going now, he's going to pursue his MA, so he is like abhi to main physically रहूंगा भी और मम्मी ऐसा उटपटांग चीजें करती रहती है, तो कितना देखेंगे, अपर्णा क्या क्या करेगी, so that kind of thing. Husband, so you know, jab, so it is out of sheer desperation, it is sheer frustration, and I keep trying to tell him that I'll be okay, I know that I am okay, I'm like, और I don't like to say it कि वो देख लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो देखना भी है, हमको भी देखना है, and that's why I try to keep my routine of my yoga and meditation going, कितना भी जो भी, even if I have to leave at 5 in the morning, I get up at 4 and do it. It's for my body, my physical body. I have really learned it the hard way कि ये ऐसा छोड़ के नहीं चलेगा कि कोई देख लेगा, you got to take care of certain things, like you know, तो जैसे आपको कपड़ा आपको ही धो के पहनना है, वैसे आपके अंदर के इसको भी आपको ओवरऑलिंग और ये सब की जरूरत है, वो हमेशा you cannot keep leaving it on to someone else, kind of, you know. But yeah, I they love me, I feel that's all I can say. They love me so much that they pardon me for all my stupid mistakes. आज भी कल मैं माहिम में गई थी, वहां एक नीम का झाड़ उठा के लेके आई हूँ और एक मैंगो का ट्री वहां मर रहा है मेरे घर के सामने, तो ऐसे किसके बाजू में, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज मैंगो ट्रांसप्लांट होता नहीं है, दैट्स व्हाट एक्सपर्ट्स हैव टोल्ड मी. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट वो नहीं दिखा रहा है साइन, तो आई सेड कि उसके बाजू में एटलीस्ट मैं एक नीम का लगाऊं, तो मैं वो माहिम से उठा के लेके मैं इनको मेरे हस्बैंड को बोली कि वो अभी द सॉइल इज नाइस एंड यू नो इजी हो जाएगा डिग के लिए, तो अब लगा के आते हैं. एंड आई टोल्ड देम दैट आई हैव एन इंटरव्यू नाउ, आफ्टर दैट आई हैव 2 कॉल्स, ये वो, तो हम बाहर जा रहे खाने को because I'm not preparing lunch at home. So yeah, they just nowadays I think I always tell this to my children, but in their case also it's not, I'm not asking them, I'm telling them कि ये हो रहा है, ये होगा, ये करना है, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये करूं क्या. So it's like yeah. एक और चीज है यहाँ पर, ये तो सारी अच्छी बातें हो रही है. You talked about troubles, you talked about solutions that you come up, your unique worldview where you see things as a single energy, for want of a better term, that all of it is doing what it should be doing, good things, bad things, everything is perfect. तो मेरा क्वेश्चन आपको ये है, what about really dark days, जब आपको तकलीफ होती है, मतलब genuinely where you are at a loss. So if we go back to the time where your mother was positive and serious and you were not, and you had to go with her to the hospital, prayer तो ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग prayer करके मतलब हारते भी है ना, वो feeling of sinking is there because the hopelessness. उस वक्त आप अपने आप को क्या बोलते हैं, मतलब I don't want the answer to be prayer is one more addition to it. What inside you keeps that, you know, is it that fighting spirit or what is it? I don't know, I keep telling myself only one thing, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. अच्छा. I feel that even, I don't like to say, even I don't like to get the idea in my head that if my parent passes away वो अच्छे के लिए, बराबर, तो वो है बस. I just like it is a very very strong mantra now I have just put into myself, and बहुत बार dark days बहुत हुए, बहुत. When I always tell them, like, I mean, I'm a social entrepreneur, I do a lot of sessions with school children, तो motivation मेरा काम है कि बच्चे ये line में आए, ये वो and all that stuff. But if I have to tell you, the very first time when I started this whole concept of having a one-stop shop for environment friendly products, my then organization also was not very happy about the whole thing, but sir ने बोल दिया कि ठीक है, you are very keen, चलो शुरू कर देते हैं.
and I was going to put up an exhibition in a very, very reputed company, reputed IT company. Let's not name the company. And I went all the way Jawar, Wada, 110 kilometers. तब तो मेरे पास products कुछ भी नहीं था, but opportunity था, and I saw such a big company. 9,000 rupees के products मैं खरीद के लेके NGO ने पैसा दिया वगैरह. That day when I was supposed to go for the exhibition भी मैं घर में गिर गई. ऐसा नहीं नहीं नहीं, अरे यार पहला एग्जीबिशन है, मैं नहीं जाऊंगी. तो कैसा पैर में बैंडेज वगैरह बांधा और चल दिए फिर से भी चले. एंड उस दिन मेरा सेल पहला एग्जीबिशन जिसमें 9,000 रुपीज का प्रोडक्ट्स लाया, एंड पीपल आर अग्लोर कमिंग ऑन द स्टॉल, ये वो. और तब मेरे पास 1 रुपए का सामान से था, 1 रुपए का बुकमार्क भी था. तो ऐसा भी नहीं कि चीजें सारे महंगी थी. एंड मैंने सेल किया 70 रुपए. 70. वो भी किसने किया? जो मुझे मेरे बगल में खड़ी थी, वो पोली भाजी बेच रही थी. She used to run this little canteen service. She herself is doing that to make 2 ends, to get a square meal and things like. And she told me, I remember her words, की मी तुमचं तळमळ बघतेय, तुम्ही सकाळपासून इकडे उभे आहात आणि तुम्ही बोलतायत आणि कोणाला दिसत नाही. मला हे वाटलं मी 70 रुपयाचं सामान शीज बाय. I told her one thing only, कि ये सब 6-figure salary वाले. You have put all of these to shame. You just put all of these people to shame. अरे नाही मॅडम, हे ना इकडे लॅक्मेची जेव्हा स्टॉल लागते ना, तर ATM ला लाईन असते आणि मग तिकडून लोक इकडून लाईन लावतात. I said I have nothing against them. I don't have anything against them. But what I learned from the whole thing, कि मैं जितना ये सोच रही थी कि इजी है, अरे क्यों नहीं लोग लेंगे, तो मैंने एक काम सोच लिया है कि नेवर कीप माई सेल्फ एज अ बेंचमार्क. मुझे जो बहुत ये लगता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो सभी को नहीं लगता है. So if I keep telling from my point of view, I will keep getting hurt. I will keep feeling demotivated. I will keep feeling. I always now go with this that अरे उनको कोई लेना देना नहीं, तो फिर उनको कैसे पटाए, उनको कैसे दिखाए, उनको कैसे समझाए. But कैसे है? They are insane. I am not insane. They are insane. They are not realizing there is no planet B. उनको नहीं दिखाई दे रहा है. Probably मुझे वो दिखाई दे रहा है. तो I am in that sense enlightened. तो enlightened व्यक्ति का काम तो होता ही है ना भाई, lighten up करो. तो आप देखो आपको नहीं दिख रहा है तो भाई don't try to be in this ignorant world. It doesn't work. Climate change is at your doorstep. अभी वो दूर नहीं है. It's knocking. अभी now what are you waiting for? Christmas? नहीं होगा अभी नहीं होगा. There is no tomorrow. You have to act now. Now is the word. अगर आपको कुछ लगता है composting, I have done so many sessions on composting, telling people कि dry waste, wet waste कैसे segregate, waste waste का अपना घर में compost. I have been doing it for 12 years. I don't know how many sessions I have done in my building. composting के लिए I just submit all saying that कचरे डस्टबिन में नहीं, कचरे आपके दिमाग में. जब तक वो कचरा नहीं निकलेगा तो डस्टबिन वाला कचरा तो वैसे ही रहे. उसको निकालने की जरूरत है. वेरी फ्रैंकली इट्स एन एज ऑफ गार्बेज. वो स्टोन एज हुआ करता था, ये वो, आज का एज गार्बेज का है. और यही रहने वाला है रिसोर्स. बिकॉज 2 चीजें हैं नेचर का. वेरी क्लियर नेचर इज कि नेचर के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं. बहुत लिमिटेड इन द सेंस कि इतना ज्यादा है कि आई डू दिस एक्टिविटी विद स्कूल चिल्ड्रन नॉर्मली, कि अगर आप पूरा एक 2 लीटर का पेप्सी बॉटल लोगे और उसमें पानी भर दोगे पूरा एंड तक, उसमें से इंक फिलर से एक ड्रॉप अगर निकालोगे तो इतना ड्रॉप है आपके सारे सरफेस वाटर इसमें, नदी तालाब वगैरह में. That is the water that is available in your rivers, ponds, lakes and things like that. That water that is there in an ink dropper compared to the water that is there. And भगवान नेचर ने इतना बनाया कि ये इनफ है, सफिशिएंट है सबके लिए. इट्स अ मिथ दैट हमारे पास पानी नहीं है. हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं, वो सही है. दैट इज वो रियलिटी जो भगवान जो नियर है. जैसे वही बोलते हैं ना कि लीनियर इकोनॉमीज एंड ऑल इज अ टोटल डिजास्टर.
जब तक आप नेचर के लॉस के बलबूते पे अपना जीवन नहीं चलाओगे, यू आर गोइंग इनटू द डूम्सडे, यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स अ वेरी वेरी डीप खाई जिसमें आपको गिरना ही है, बिकॉज यू आर गोइंग अवे एंड अवे फ्रॉम नेचर्स लॉस. नेचर्स लॉस आर सर्कुलर, और जितना वो सर्कुलर को आप खींच के स्ट्रेट लाइन बनाओगे, टेक मेक डिस्पोज, टेक मेक डिस्पोज, टेक मेक डिस्पोज, तो आप भी डिस्पोज ही होने वाले एंड में. तो ये गार्बेज ही आपका आने वाला रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि नेचर हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड नेचर हैज अ वे ऑफ पुटिंग एवरीथिंग इन अ सर्कल. तो लिमिटेड रिसोर्सेज को तो आपने एक्सप्लॉइट कर दिया, एंड जो भी एक्सप्लॉइट भी करते हो तो आप सर्कल पे लेके नहीं आते उसको, तो वो आप बर्बाद कर रहे हो. आप कहीं लैंडफिल कहीं इसमें डाल के यू आर मेकिंग इट इनटू अ स्ट्रेट लाइन. तो ये दोनों चीजें के कारण नेचर इज नाउ हाथ ऊपर कर दिया भैया. अभी आई डोंट नो व्हाट टू डू. ये मैन क्या कर रहा है? लाइक आई ऑलवेज गिव दिस की भगवान ने इतना सुंदर क्रिएशन बनाया, ये अर्थ एंड सारे, एंड कोई भी अच्छा चीज हैज टू कम टू एन एंड ना. तो भगवान को ही नहीं पता था कि अभी इसको एंड कैसे करें, तो ही मेड ह्यूमन बीइंग्स. अब उसका काम हो गया, नाउ बाकी का काम हम लोग कर लेंगे. सो वी आर हियर टू एंड द ब्यूटीफुल क्रिएशन दैट ही हैज मेड. So, I always believe at that. We can prove him wrong, I think, with a little eyes open. I mean, I always tell कि अगर आप आंख बंद करो तो डिफॉरेस्टेशन होता है, और थोड़ा वही आंख को खोलो तो आप जाओ महाराष्ट्र नेचर पार्क माहिम में. इट इज अ फॉरेस्ट ऑन अ डंपिंग ग्राउंड. जहाँ पहले कचरा हुआ करता था, आज जंगल है. तो वही इंसान अगर थोड़ा आंख खोल के काम करे तो बहुत कुछ हो सकता है उसके ही भले के लिए. वी आर द मोस्ट सेल्फिश स्पीशीज ऑन अर्थ टुडे. जो भी हम करते हैं, इवन इफ आई एम डूइंग एनीथिंग, आई वांट टू सी दैट माय चिल्ड्रन गेट सम ऑफ दिस रिसोर्सेज एटलीस्ट टुमारो. क्या दूं मैं? बैंक बैलेंस दूं, गाड़ी दूं, बट रोड ही जगह ही नहीं है, घर कहाँ बांधेंगे? आई डोंट नो व्हाट डिजास्टर विल ब्रिंग विच बिल्डिंग डाउन. तो फिर मैं व्हाट एम आई लीविंग फॉर देम? सो आई एम ट्राइंग टू एंश्योर कि भाई मेरा आने वाला, मेरे बच्चों को कुछ तो प्लैनेट बचे. We are doing all this. We are not doing it for any elephant or crow or tiger. We are doing it for ourselves. And at least I try to request people कि at least वो तो समझो. So कचरा अपने दिमाग से निकालना. अगर आप कचरा अपने दिमाग से निकालो तो इंटरनेट आपको सारे सॉल्यूशंस देंगे कि कहाँ से कंपोस्टिंग करना है, कैसे करना है. There are lots and lots of them. As you said, ones who are only sitting to make business and ones who are also trying to conserve along with it. वो आपको समझ में आ जाएगा. When you get into it ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सिर्फ बिजनेस के लिए और कौन किसके लिए. तो जो लोग, I mean, basically whenever I do composting and there are some people who say कि मैं भी, my first question is आप कितने साल से कर रहे हो? अगर आपने 10 दिन के लिए किया तो आप कंपोस्टिंग नहीं कर रहे. ये एक हैबिट होने की जरूरत है. एनवायरमेंट कंजर्वेशन हैज टू बिकम अ हैबिट. जब तक वो हैबिट नहीं होगा ना, इट्स नॉट अ वन डे अफेयर कि चलो आज आई एम इको फ्रेंडली, चलो आज थोड़ा मैंने जैसे आप बोलते हो ना गले पे, जब तक आप बैठे हो तब आप कर लो, तब आप, और फिर शाम को आके थोड़ा पूजा पाठ कर लो तो चलो मैंने आज का पुण्य कर लिया. तो इट डजंट वर्क लाइक दैट. यू हैव टू बी conservative through your whole day 365 days, because we have done so much disaster, so much कि अभी ना पार्डन करने को टाइम ही नहीं, बिल्कुल टाइम. This has been a wonderful chat. You have covered so much ground, right from the inner environment, and it is not surprising that we talk about the outer environment as we end this chat. And thank you so much for taking the time and speaking your heart out. Like you, I really don't know if I did any justice, but I try to, as you said, I try to be what I am. That's all. Yeah. Thank you so much. Because yesterday whole night I was pondering on that कि मैं क्या बोलूं, मुझे पता नहीं. नहीं, मैं इसीलिए किसी को कुछ क्वेश्चंस पहले से देता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ही नहीं मालूम होता. मैं खुद भी उतना ही खोरा होके आता हूँ कि चलो देखते हैं क्या होता है. And I am always pleasantly surprised. वही दिमाग से कचरा कम करने का ये भी एक कोशिश है. तो जरा सोचिए.
Very true. Thank Very you so true. much. Thank you. Thank you. I'll definitely meet up with you sometime whenever Yes. possible. It will be great Yes. connecting. Thank you Yes. for this opportunity. Thank you. Thank you. Thank you so much.